Hi all, good evening. Just wait a few minutes, we'll start. Good evening, Pankaj. Good evening, Vishal, good evening. Just 1 minute, just give me. All right, guys. So let's start the session, okay, without any further delay. I can see most of the participants already joined. So this is totally, troubleshooting session based on the like you all demand. I just, planned one of the troubleshooting session. So we can have a discussion in deep dive about the troubleshooting of the Palo Alto firewall. So what I'll do, I'll create one trouble ticket for you all, and we'll try to solve that trouble ticket by exploring the all feature of the Palo Alto firewall. So that feature is going to based on the debug, packet capture, and everything. We are going to do that. So I believe we can start now. So let's explore. If you guys having any question and query, just raise your hand or just try to speak with me. There is no problem. We can have the Google communication, right? And if you not understand in English, you just ask me. I'll try to explain in Hindi as well, because sometimes we understand better in the mother tongue language. So let us start. So the problem is we having a side-to-side VPN running between these two locations, right? And one of the user reported he is not able to reach from this location to this location. He's not able to ping this site location to this site B location from this PC to this PC. So how we are going to fix that? The first step we have to check whether my reachability is there or not. So let me just test it from this PC. So I'll go on this PC and I'll try to verify whether my reachability available between these two site to site location or not. Okay. So if I'm going this particular PC5, right? So this is PC5, and if you check that IP config, right? So this is the correct IP address. And earlier you can see if I was trying to reach this particular PC 172.16.10.10, and this PC having the same IP address, you can see it was reachable. But let me try once more and let me see. And see, it is not reachable, right? So now we don't have connectivity between these two devices. So what is the issue? We just have to figure it out. Where is the issue and what we can do to just fix this issue. So step by step, we just have to do a troubleshooting. So let me just write the trouble ticket here also in my lab. So trouble ticket, right? Site A, user unable to reach site B, user via IPsec tunnel. Right, this is the trouble ticket we have. So let me just make it colorful. So this is a trouble ticket we have, and we just have to solve this trouble ticket. Let me put it here. So okay. So let's start the troubleshooting. How the troubleshooting is going to happen. So the first step, if I'm an engineer, right, I'm working in the NOC or SOC, my approach should be, if this is my client and he is trying to reach to another client who belong to different site location. So before I go and check anything, first step, I will check
whether my PC gateway is reachable or not. Gateway is reachable or not. This is the first step, right? So you also have to follow the same first step. So we'll try to explore one by one all the steps, but this is the first step. We just have to check. So let me just verify this first step, whether my PC is able to reach his gateway or not. So if I'm going here, so how can I check? Any questions, Subham? Anything you want to ask, or shall I mute you? Let me mute. Can I ask a question, Pankaj? Very Yeah, generic question. yeah, please tell me. मतलब मैं ये सोच रहा था कि what is the basic prerequisite for doing this certification and why should somebody do this kind of a certification? First question, and the second question is, what are the career options in general, and if you could give probably a very generic range for the package that people get after doing this certification. Okay. Thank you, Vishal, for asking the question. So let me just go in our websites. Okay, so that's a really good question. So let's start some basic discussion, then we'll go on the troubleshooting. There's no problem. So because we're having questions, we should respect the questions as well. So let's explore, right? So if we are doing the Palo Alto certifications, right? So what kind of jobs we can find in the market? So this is the first thing. So we're having a multiple jobs available, multiple job option available in the market. Like you guys can become the security analyst, SOC engineer, cyber security engineer, security administrator, security consultant, security architect. But if you talk about the security consultant, security architect, that is a very higher level of jobs. But if you're planning to upgrade your knowledge, right? Let's suppose you having a good knowledge of this routing and switching, that is the foundation and the fundamental of the things of the networking, and you trying to explore your journey in the security, that is going to give you the more attractive package from the market. Like if you're having already experience in networkings and you do the security, then your package is going to be double. But if you are the fresher, right? If you are the fresher and you just started your career and you just wanted to start your career with the security, then also it's fine. There is no problem. You can start it. There is no problem. But it always prerequisite, you should know basic networking. So if I talk about the basic networking, you should have the CCNA level of knowledge. If you're having a CCNA level of knowledge and you done any of the firewall, then you can easily start your career. That starting package with 3 to 5 lakh per annum. If you are the fresher, if even you are not done the BTech, you just having the normal graduations, and you just really passionate about learn about the concept, you can start your career in this way. So entry level. Yeah. If I could interrupt, what I have understood is कि आपको अगर फ्रेशर होने का मतलब ये है कि आपने नॉर्मल कहीं किसी भी स्ट्रीम से बीए बीकॉम कुछ भी कर रखा है, और आपने सीसीएनए लेवल का फायरवॉल का कोर्स कर रखा है, if you have the understanding, and then if you want to pursue your career into security, then you can go for this course. Yeah, definitely. So we're having a different module available, like network engineer. It's also a average salary for this is for the fresher, right? Absolutely the fresher. You can start your career with 3 to 5 lakh per annum. But the more and more you having the experience, more and more knowledge you have, you just going to gain more and more packages. So nowadays, if I talk about the general package for the 4 and 5 year of experience of any network security engineer, it's going around average 10 to 12. So this is the market trend, how we have in the market having very high demand. Yeah. थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. ये जो आप नेटवर्क इंजीनियर की बात कर रहे हैं या किसी और जैसे डेजिग्नेशन का, सो इट इज नॉट नेसेसरी. जनरली लोगों का यही परसेप्शन होता है जिनसे मेरी बात होती है, मुलाकात होती है, कि भैया आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होगा, देन ओनली यू कैन बिकम दिस. बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज. कोई नॉर्मल, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बीए का बंदा हु डज फायरवॉल certification and CCNA can go for this, and later on in his career after gaining experience can become a network engineer. BTech होना या कोई technical degree होना जरूरी नहीं. Right, absolutely right. कोई prerequisite नहीं है डिग्री का. आप अगर normal graduate हो, even you done the BSc, BCom, BA, आप इसमें किसी भी फील्ड में आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं. यू कैन बिकम द क्लाउड इंजीनियर, यू कैन बिकम द नेटवर्क इंजीनियर. बट सबके लिए आप ये कुछ भी करो, ट्रस्ट मी,
if you are planning to become the security engineer, cloud engineer, networking is very must. आपको basic networking आनी चाहिए. The CCNA is the like first step to start your journey. अगर आपको CCNA नहीं आती है and you just planning to go in the cloud and the security, थोड़ा सा struggle आपको होगा. कभी ना कभी आपको चल के सीखना ही पड़ेगा. नेटवर्किंग आपको आनी ही चाहिए. इसलिए कोई भी एक अच्छा इंजीनियर जो होता है, इवन ही इज द क्लाउड इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, वो हमेशा नेटवर्क इंजीनियर से ही उसका DNA मैच होता है. देन ही इज गोइंग टू परस्यू द करियर. सो द क्वालिफिकेशन डजंट मैटर. इसमें कोई कोडिंग नहीं है. कोई आपको ऐसी चीज नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा आपको हमेशा कोड करके लिखना है. इट इज समथिंग यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस, सेट अप द रूल्स, सेट अप द रेगुलेशंस. आप उसको फॉलो करके यू कैन जस्ट कंप्लीट योर और लर्निंग. जैसे जो कोई हमें स्टेप कोई कहानी लिखने वाला हो, उसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए एंड देन जो उसका प्रोसीजर है आप फॉलो कीजिए. और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विशाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर आपको बेसिक इंटरेस्ट है कि आपको ये चीज मुझे सीखनी है, आप सीख सकते हो. कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग या मतलब कोई प्रीरिक्विजिट की जरूरत नहीं है. आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो. बस यू शुड बी रेडी टू लर्न. ठीक है. So let's start. So guys, you can explore our websites as well. This is our new website. So let me share the links if you guys interested. So still there is some kind of progress, but you can explore. So let's move to the topic again. So okay, so there is a trouble ticket. हमारे पास एक trouble ticket है, and we just have to fix this trouble ticket, right? So in this trouble ticket, what we have to do, basically we just have to solve the problem between these two site locations. So let me just go with the first step again. The first step, we should have to make sure gateway reachability test, right? So we should have to check the whether gateway is reachable or not. So let me just go on the PC. So this is my PC 5, and if I'm going here, let me just try to check the IP config. If I'm going here and if I'm checking 192.168.10.1, you can see the gateway is reachable. So the first condition is fine, right? So what next? So my gateway is reachable, then I know there is no problem from this PC to this gateway. So this area is isolated and this is completely issue free. Now we just have to focus after this to this particular location. Is there any issue with the ISP? Is there any issue with the firewall? Is there issue with any configuration? Or might be this client is down, this firewall is down, this switch is down, this link is down. Anything could be happen, but how we can check step by step. So the second step, what we have to do, we just have to make sure whether my particular firewall, which is connected to the ISP, the tunnel is up or not. Just I will verify whether my tunnel is up or not. How can I verify? So I will just go there in my network section, and after going in this network section, I'll check the IPsec. When in IPsec, I can see my tunnel is up and working. So it is also indicating my tunnel is up and working, but still my traffic is not working. So what is the issue? How I can check now? So the first step, when you start doing the troubleshooting after your gateway, you just have to check the packet flow. This is your friend when you're doing the troubleshooting. If you know this packet flow, your life is going to be easy. So based on the packet flow, how can I check that? The first thing, you have to check whether my firewall having routing or not. Do you have not NAT policy or not? Do you have any kind of the security policy or not? So this is the something by referring this, you can go step by step all the checks. But might be you don't want to check even this packet flow. Do you have any other way by using them? I can check the connectivity status. So yes, we having a two tools available. One is the debug and another is the packet capture. So I'm not going to touch this one. I can easily, by checking this, I can figure out where is the issue, but I will use some other tool which you guys not aware about that. Okay. So that tool is something known as the debug. So let me just open the debug and I'll try to do some kind of packet capture. So let me just start. So if I'm going in this particular Palo Alto firewall, let me first show some kind of the packet capture, okay, before going to debug. So what I'll do, I'll go in this monitor tab. After going in the monitor tab,
I will just try to apply the packet capture. Where is the packet capture? So here is the packet capture. So in this packet capture, what I'm going to do, I will say if this PC is coming to reach to this destination, I need to do the packet capture. So my source is this particular PC and destination is this particular PC for the site B. So let me just go here is option to manage packet capture. So I will just click on it and you can see there is an option, right? How basically you want to do the packet capture. Okay, so here is the option you can add the ID. So the first ID for which I want to do packet capture, I can add one. Now it is asking the ingress interface from where your packet is coming. So for us, my ingress interface is something this interface 1/2. My packet is going to come from this interface. So this is my input interface or ingress interface, right? So I will use this interface in my packet capture to just, capture the traffic. So let me just go and I will add here and I'll select 1/2. See, now it is asking what is your source address, right? So the source address is 192.168.10/10. If you guys feel you're not understanding, raise your voice, raise your concern, right? So we can discuss right away. Okay. So here, if I am going, the source address is 192.168.10.10. So ये हमारा source IP address हो गया, right? So after that, we just have to put another field which is our destination IP address. So destination IP address क्या हमारा है? That is 172.16.10.10. ये वाला IP address हमारा destination है. So we'll use this, right? So मैं यहाँ पे जाकर इसको destination भी configure कर दूंगा 172.16.10.10. So this is my destination IP address. Now it is asking what is the source port, what is destination port, what is the protocol. So for time being, we'll leave blank. So any protocol, any port, it is going to be considered because we are doing the ICMP test. So I'll just click OK. So my filter is ready. So the first step, you just have to create the filter, right? When you're doing the packet capture. Still, it's not debug. It is something different than debugs. So we'll explore what we can do in the debug, what we can do in the filter, and what kind of troubleshooting we can achieve it. Okay. So ये दोनों चीजें हम try करेंगे explore करने के लिए. So now what I have to do, filter is applied, right? So after applying the filter, we just have to turn on the filter. So we're having a two option here. You can see one is the filter, which is going to be turned on, which is right now off conditions. And dusri, we have the pre-price match, right? So in pre-price match, we just have to enable this also. So what is the difference between the filter and pre-price match? Guys, let me just mute. So if you are talking about the pre-price match, that means if your packet is just hitting to the firewall and before entering to the fast path or slow path, just receive the packet and during the, getting the L2, L3 and L4 information of the firewall, if there is some kind of the issue in the packet, then your packet is not going to check further any routing lookup, NAT policy and security policy lookup, right? So might be you just want to check whether your packet when I receiving in my incoming interface, I want to just verify whether they're having a correct detail or not. So you want to check that level of the information. So it is just going to consider the pre-price match. So generally we don't do, but if you want to do that, even when packet first time enter to the interface and during that time also you want to check that, you just have to enable this pre-price match. So if you want to learn more about it, so you just click on this particular I button and it'll get some kind of definition here. So it is clearly explaining you about the pre-price match conditions. Let me show you, so at least you can understand. So here you go in the packet capture and which section we are. Let me just show you. So this is my configuring filtering. Okay. So packet capture overview, manage filter, and just let me go. Yeah, you can see here. So pre-price match conditions. You can see this option is for advanced troubleshooting purpose. Even somehow your packet is not able to capture during the firewall, and there might be some issue while the packet is just entering into the firewall before
doing any kind of processing, and it is not able to capture any kind of the slow path, fast path issues during the packet capture. So you can apply the pre-praise match. So it is just going for the advanced troubleshooting, and it is just after packet enter to the ingress port, it is processed through the several processing step before it prays to the matching against the pre-configured filters. So this is what I am trying to say. So अगर आपको उस कंडीशन पे इस फिल्टर को लगाना है जब आपका पैकेट फायरवॉल के अंदर जाता है and some region firewall is not able to detect some parameters, and you want to just try to explore those parameters just entering the packet in the ingress interface, so you can just apply this filter. Okay, so pre-praise match आप इस पे लगा सकते हो, right? So generally हम लगाते नहीं है, so we can off it, and if you want to do that we can enable. Let's enable it also. Now we having the filter, so this should be enabled. इसको आपको enable करना ही करना है, right? So this should be enabled. So I'll just click on and it is going to be enabled. So this filter is going to be enabled here, and pre-praise match is also enabled. So either way, if any issue in my packet, that is going to be captured. So before you enable these two things, right? I'm again telling your filter should be always off. It is going to enable in very last stage. You just apply the very first stage, this particular filter, not filter, this is a source destination in manage filter, and you should not on this pre-praise and the filtering conditions. So you just keep this manage filter first step. Then after you having the stages where you have to enable the packet capture. So you just not on the filter, not on the pre-praise match, not on the even the packet capture. See, it is giving the warning. So what we have to do, the first thing after this manage filter, we just have to define the stages on which stage I want to do the packet capture. So there is total 4 stages in the firewall. One is the drop stage, one is the firewall stage, one is the receive stage, one is the transmit stage. So if you are going for any of the interview, they might be asked, what are the various stages in the Palo Alto firewall which is going to process the packet? So the first step is like drop. So that means if any traffic is going to drop in the Palo Alto firewall, they are going to capture in the drop stage. So you just have to define the file name. So I'll just put the DR is a drop. You can put any name. So I'll put the DR. So drop is straightforward. Any packet is going to drop in the firewall for any region, that is going to capture in the drop stage, right? So this is the first stage. Now, second stage, we having the firewall stage. So what is the firewall stage? So that means your packet is landed to the firewall and it is doing some kind of processing, might be the slow path, fast path, the application identification, and any kind of the content inspection. So these all processing during the processing time, if you want to capture these all information, that is going to capture in the firewall stage. So if you go here again, let me show you. It is not going to show. Let me just show you here. Let me just click it. And you click in the I button, you'll find more information. So if I'm going here and yeah, let me just go there. So here you can see. So clearly all definition is written. So drop stage, that means the packet is going to be dropped when packet is processing via the firewall, and it is going to be, encounter any kind of the error drop. So that is going to capture in the drop stage. Firewall stage, likewise, when your packet is inside of the firewall and this firewall is doing various kind of the session match, right? It might be doing the application checks, it might be doing any kind of the routing checks, it might be doing any kind of NAT policy, security policy, anything if it is doing, that is going to be captured in the firewall policy. This is the firewall stage. Now the transmit. So transmit, that means your firewall is going to transmit the packet without any issue. Means your packet received from this ingress interface and it is ready to transmit to the another interface or to another firewall. So this is going to capture in the transmit stage, right? And the last one is receive stage. That means your packet has been received from any of the device to particular ingress interface. So this is my receive stage. So receive is something receive, transmit is something transmit, drop is something there is issue in the firewall, which is going to be drop. And the last one, which is my firewall stage, that means any processing is going to happen inside of the firewall, that is going to process in the firewall. That is a firewall stage. Okay. So this is how we can classify these 4 filters, right? And we just have to capture all the parameters inside of this particular 4 filters. So I'll put in the drop already created. So let me just create another filter.
this filter is going to be firewall. So I'll just put FW. And the next step I will do as a receive. So I'll put RX, right? And then I will just use the last step, transmit. So I'll just use TX. So my filter has been, applied. This manage filter also, my capture is also applied. So now we are ready. So I can turn on my filter. I can turn on my pre-press match, and also I turn on my filter. So if you are going to turn on your filter, this is going to give it a warning. Packet capture is for the troubleshooting only. This feature can cause the system performance to degrade and should be used only when it is necessary, right? After the complete of the packet capture, you should just, make sure you want to, disable it. So this is a warning. This is not something good. So अगर आपको packet capture लगाना है, तो make sure कि लगाने के बाद you should stop it. वरना your firewall is going to be, affected with the performance, or might be major outage is going to happen. Yes, please. सर ये जो 4 स्टेज है सर, ड्रॉप, फायरवेल, ट्रांसमिट एंड रिसीव, शायद है ना समथिंग, हाँ रिसीव, ये कॉमन, इसको इनेबल करने से जो मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, प्री जो है दोनों प्री प्रेस मैच है, प्री प्रेस मैच फिल्टरिंग, दो चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, इनको दोनों तो कंपलसरी है इनेबल करना, ठीक है? नहीं कंपलसरी दोनों नहीं है, कंपलसरी एक है, जस्ट आप फिल्टरिंग इनेबल करना है। दिस इज समथिंग फॉर एडवांस ट्रबल शूटिंग, जस्ट यू रिमेंबर फिल्टरिंग इज जस्ट कंपलसरी, ये कंपलसरी आपको। अच्छा, इससे क्या होगा प्री प्रेस मैच से? प्री प्रेस मैच तब होता है जैसे मान के चलो कि आप किसी भी रीजन से फायरवॉल में ये चारों स्टेज में कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा, राइट? और आपका पैकेट जैसे फायरवॉल पे लैंड किया, राइट? और वो इनिशियल स्टेज में ही उसमें कुछ एरर है, कुछ किस तरह का प्रॉब्लम है, एंड यू वांट टू कैप्चर दोज एरर एंड कैप्चर एंड प्रॉब्लम, राइट? जो यहाँ पे इनिशियल इनग्रेस स्टेज में जैसे पैकेट रिसीव हुआ, जब वो L2, लेयर 3 एंड लेयर 4 एंड लेयर 3 की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है फायरवॉल, तो उस केस में चेक करता है द फायरवॉल द पैकेट रिसीव देयर इज एरर और नॉट। सो उस एरर को कैप्चर करने के लिए आपको प्री प्रेस मैच यूज करना पड़ता है बेसिकली। अच्छा, तो करने अगर पॉसिबल हो तो कर दे, कोई इश्यू तो नहीं रहेगा? नहीं, कोई इशू नहीं। दिस इज लाइक इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इशू, आप इसको यूज कर सकते हो, बट जनरली हम फिल्टरिंग यूज करते हैं। जब तक हमारा इसमें कैप्चर नहीं हो रहा, फिर भी आपकी ट्रबल शूटिंग हो रही है, तो यू कैन इनेबल इट, बट फर्स्ट दिस इज गो विद द फिल्टरिंग, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, और सर ये जो 4 स्टेज है, ये इस पालो अल्टो फायरवॉल के मतलब स्टेज हैं ये, या फिर इनको बनाना पड़ेगा स्टेज चारों को? नहीं, बाय डिफॉल्ट दीज आर द स्टेज, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट 4 ही दिखाते हैं, आप इसमें से 5 नहीं कर सकते हो। ये 4 ही स्टेज होते हैं फायरवॉल के पैकेट प्रोसेसिंग के। या तो पैकेट आएगा फायरवॉल में ड्रॉप हो जाएगा, या उसको ट्रांसमिट कर देगा, चारों स्टेज, या तो फायरवॉल में प्रोसेसिंग करेगा। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट फायरवॉल करती है जब पैकेट प्रोसेसिंग करती है। जब भी फायरवॉल में पैकेट आता है, इट इज गोइंग टू बी डू ऑल द प्रोसेसिंग इन द पालो अल्टो फायरवॉल सेक्शन। सत्यम, क्लियर आपको? हेलो, I believe we lost Satyam. You there? Sir, it is just like the debug. No, debug is something different, Sanjay. I'm coming to debug. This is something pure packet capture, not debug. Debug is something, very, broader, and it can be classified in different way. I'm just going to come after this in debug only. And we'll sir, try to understand. हाँ, बताइए. In FortiGate, we are using sniper command for the log capture. So there is showing the incoming packet and outgoing packet. Suppose that if any packet is coming, so it is showing the echo request and echo reply, but there is not showing the drop or transmit. So I'm going command. No, I'm going to show you. Everything is going to show you, even echo reply and response. Everything is going to show. That I'm going to show you. Just give me a few minutes, okay? So now we're done with this packet capture, and we're ready. There is no commit is going to be required, and you see there is no files. If any capture is going to happen, the file is going to show in this section, okay? So let's initiate the traffic now. So I will go on this particular PC again. I'll try to check what is happening, okay? So I'll try to ping to the destination. This was the destination. When I was trying to reach, it was not reachable. So let me just try it again. So I'm going to send 4 or 5 packets from here, and let's see what is happening in the firewall. So just wait.
So see, there is total 4 packet has been sent out from this particular PC and all 4 has been lost. So 100% lost, there is no success rate. So let's go here and just refresh it. Once you refresh it, you see there is 2 packet has been captured. You can see here. One is the firewall stage, one is the transmit state. Receive stage. So there is no drop happen on this firewall. There is no drop happen this firewall, right? And firewall is doing some kind of the firewall stage, and after that it is not able to transmit even the packet. So there is no transmit packet also, but it is stuck in the firewall stage. Means while doing the policy lookup, NAT lookup, and the routing lookup, somewhere it is getting failed. That means, so that might be any issue. So यहाँ पे just we have the firewall stage and the receive stage. So let's see what is happening in these 2 packets. So I'll just open it. It's required the packet capture. So we not have this WireShark installed in this PC. Let me try to install it. And let me just try to install WireShark. So just give me 1 minute. So let me just WireShark download, because we have to check the WireShark, and based on the WireShark, we just have to check the packet. So this PC doesn't have the WireShark, so we just have to install it. सर थोड़ा बीच टॉपिक में सर हिंदी भी यूज कर लिए, सर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, डन मैं करता हूँ बात ये भी है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, इसमें WireShark चाहिए होगा क्योंकि बिना WireShark का हम दिखा नहीं सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक gmail.com भी खोल लेता हूँ, अगर यहाँ नहीं चला तो आई विल ट्राई टू सेंड वाया द जीमेल। तो ये नहीं खुला, राइट? So let me try to email. क्या आ गया यहाँ पे? Yeah, it's installing. So good. अभी इंस्टॉल हो जाएगा, so we can test it. सर जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक आप मुझे बता दो कि अगर मान लो कोई फाइल अगर हम ब्लॉक करते हैं और फिर हमारे कंपनी को कोई फाइल का नीड है कि मतलब इसको हमको डाउनलोड करना है, तो उसको एग्जाम्प्ट कैसे करेंगे या फिर उसको कैसे अलाउ करेंगे? पालो आल्टो में आपको चाहिए फीचर, किसी और में चाहिए? नहीं, पालो आल्टो में। पालो आल्टो में आप फाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। उस पर एक ऑप्शन होता है कि ब्लॉक कैटेगरी के अंदर कंटिन्यू का वार्निंग देना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू फीचर भी लगाना पड़ेगा, तो यूजर को वार्निंग जाएगा, राइट? और आपको यूजर को वार्निंग जाने के बाद भी अगर यूजर लगता है कि मुझे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेगा। तो आप इसमें ब्लॉक कर सकते हैं, कंटिन्यू का फीचर दे सकते हैं। दो ही फीचर हमारे पास। वो तो मैंने देखा था, वो तो मैंने पढ़ा था जो आपने पहले पढ़ाया हुआ था मुझे। तो इसमें मैं कह रहा हूँ सपोज दैट कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरा जितने फाइल्स वगैरह, जैसे सपोज दैट .exe फाइल हम सारा ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब हमको नीड है कोई मतलब एक पर्टिकुलर हमारा कोई इन लोगों का एप्लीकेशन है जिसको .exe पे चलता है, तो होता नहीं कि हम एक्सेप्शन में कोई एक दो अलाउ कर दें, तो ऐसे क्या हो सकता है? तो इसके लिए आपको एक आप किस यूजर के लिए अलाउ करना है? सब सारे यूजर के लिए अलाउ करना है या किसके लिए अलाउ करना है? हाँ, सारे यूजर पे करना है। तो सारे यूजर को करना है तो एक रूल बना दो, उसके अंदर बस एक से फाइल अलाउ कर दो, हो जाएगा, बस खत्म। एप्लीकेशन में जाकर एक अलग कैटेगरी बना लो जो भी आपको फाइल टाइप है और उसको अलाउ कर दो। हाँ एक मिनट में, हाँ बताइए सर। ये अपना आपके बैक हैंड में जो एक डिस्प्ले आ रही है, हाँ, ये बहुत जगह आती है। जब इसके एडवांस में जाते हैं तो वो विदाउट मतलब एफटीटीएच के बगैर वो खुलती है। अभी ये सिक्योरिटी में खुल रही है, जब एडवांस में जाते हैं तो ये एचटीटीपी में बस खुलती है। ये क्या, ये भी सर फाइबर से क्या है क्या? ये वाला बोल रहे हैं आप? हाँ, ये जो आपका योर इसके जो डाउनलोड हो रहे हैं ना, जस्ट इसके बैकग्राउंड ये वाला, ये सब ये वायर सार्क को सर, वायर सार्क को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज वायर सार्क। ठीक है, मैं हाँ कर दिया। ये वाला पेज सर, ये वाला
योर कनेक्शन इज लो नॉट प्राइवेट मींस इसका ये इसमें सर्टिफिकेट आपका जो HTTPS का सर्टिफिकेट है दैट इज एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट है, सो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। सो आपको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कभी भी आप जब आप HTTPS बेस्ड कोई वेबसाइट आप होस्ट करते हो, सो यू जस्ट हैव टू टेक सर्टिफिकेट, आपको वेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर्ड हो जाता है दैट सर्टिफिकेट इज गोइंग टू गिव सच एरर्स, आपको ऐसा एरर मिलने लगता है फिर, इसलिए ऐसा आ रहा है प्रॉब्लम। ओके सर ठीक है। ओके संजय मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। फिर आप क्या पूछ रहे हो, देखो आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे को फाइल ब्लॉकिंग करना, राइट? से ये सारे आपका एग्जेम्प्टेड हो गए, राइट? फाइल ब्लॉकिंग हो या यूआरएल कोई भी एक बता दो आप। तो यूआरएल ब्लॉकिंग, यूआरएल तो आपको ब्लॉकिंग करना है तो यूआरएल आपने यहाँ कर दिया, ठीक है, सारा आपने कैटेगरी बना दिया, ठीक है। तो आपने इस कैटेगरी में एक आपने ब्लॉक बनाया, उसके अंदर सारा यूआरएल ब्लॉक कर दिया। तो एक आपने एक बना लो दूसरा कोई, जैसे मान के चलो कि टेस्ट बना लो, ठीक है। टेस्ट को बना के आप बोलते हो कि मेरे को जैसे बिजनेस इन इकोनॉमी को अलाउ करना है, तो इसमें आप अलाउ कर दो, राइट? इसको देखो अलाउ अलाउ है इसमें, मान के आप ब्लॉक कर दो इसको, राइट? और इसको ब्लॉक करने के बाद आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को यू जस्ट गो एंड अप्लाई, बेसिकली किसी भी आप सिक्योरिटी पॉलिसी में जाके इसको अप्लाई कर दो, या नया सिक्योरिटी पॉलिसी बना लो, इसके अंदर जाके यूआरएल में अप्लाई कर दो, तो वो यूआरएल आपके लिए बस उसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, देखो यहाँ पे जाकर, यहाँ पे जो भी यूआरएल कैटेगरी हमने बनाया, वो यहाँ पे टेस्ट बनाया था ना हमने अभी, सो यहाँ पे देखो टेस्ट दिखा देगा, कहाँ गया, अच्छा कमिट नहीं किया, यहाँ आ जाएगा टेस्ट अपने आप कमिट करने के बाद, तो ऐसे भी आना चाहिए, ये वाला कैटेगरी तो हमने बनाया था, तो क्यों नहीं आ रहा? नहीं सर मैं ये कह रहा, हाँ बताइए, आप ही पहले बताइए। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, सपोज दैट कि मेरा, हेलो अभी सुन पा हाँ रहे हाँ हैं? बताइए बताइए, हाँ सुन पा रहा हूँ बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। जैसे सपोज दैट कि मेरी साइट चेन्नई है, मेरा हम्म साइट चेन्नई है, अब वहाँ पे हम्म जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दे रहा है ना, एल्कोहल बिजनेस एंड ऑल द थिंग्स, मनी हम्म टाइम्स आप द कैटेगरी यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैंने सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। हम्म लेकिन अभी हमारे जो डिप्टी मैनेजर है उनका रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक एक जैसे उसमें उन्होंने सब कुछ ब्लॉक करवा दिया था, ठीक है ना। अब उनका क्या है कि किसी एक चीज का उनको अलाउ करवाना है, तो इस केस में क्या मतलब, जैसे 48 पे हमारे पास पालो अल्टो भी है और 48 है, हम्म तो 48 में हम जाते हैं तो वहाँ पे एग्जाम करने के लिए भी आता है, उसका नाम एग्जाम करने के लिए ऑप्शन आता है, तो वहाँ से हम एग्जाम कर देते हैं, फिर उसको हमारा चल जाता है एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ Sanjay, नहीं आ रहा it था। can be done, Pankaj sir. So what exactly we need to create a one additional policy before the blocking all policy. So in that policy, we can define the user or user group. So they Yes, can allow to access the file which are blocked in the second policy. definitely, exactly the same thing, Chirag, I was trying to say. Thank you for contribution. So this is the way, actually we have to create the specific policy based on the user and user group, and that is going to be allow or block for those users. Even for the general manager, you want to allow for the one user, that is also possible. So it There is means we have, there is a user tab in the policy, so where you can define the user. okay, it means I have to create a one rule, all right? Yes, exactly. Then you And need to create a one extra policy, and this policy should and be before on the top of the second policy, top which of the is blocking. top Yeah. of the block policy, right? Top of the Yeah. block policy. So it will be work. Yeah, Okay, thank you, Pankaj sir, and you. Chirag, yeah, appreciate Chirag, right? Very clear concept. So Okay, yeah, it's finished. Now it is going to be installed very fast. So today class will be a little bit longer, so have patience because we have to understand everything about the packet capture and this debug. So this is getting, no issue. some time. Sir, Vishnu here. Yes, Vishnu, tell me, how are you? Fine, sir. How are you, sir? Good. Tell me. आपको इधर देख करके अच्छा लग रहा है सर। Oh, thank you. Thank you so much for your kind words.
Sir, actually, मेरा concern था, I am from not Palo Alto based, I am from Versa based, okay. सर, okay. GuiNet की लैब में हम पैकेट कैप्चर कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? मेरे पास लैब एक्सेस है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पैकेट कैप्चर, चलो गुड फीडबैक, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर, ठीक है, कैसे कर सकते हैं पैकेट कैप्चर। लेकिन वर्षा की लैब में आपको पैकेट कैप्चर जरूरत है उसमें तो नहीं, खुद ही। वर्षा की लैब में नहीं सर, जैसे हाँ, जनरली वर्षा में तो वो पूरा ट्रैफिक इंक्रिप्ट होकर के जाएगा, ठीक है। राइट राइट। अगर मतलब मैं और कोई कोर्स लेने की सोचूं या करूं तो मुझे, अगर मैं मान लो कर दूंगा मतलब, इनेबल, अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आई हैव सम प्रोविजन, आई विल डू राइट स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप टेंशन ना लो उसको, ठीक है, मैं कुछ सर्च करके लगा दूंगा, राइट। ओके So let's move on this. My biosec has been ओके downloaded, right? Okay, Vishnu. Okay. So this is the packet which we downloaded. Let me just open it, okay? Because this packet only going to open in the biosec capture. So let me just open. Oh, it's taking so much time. Okay, finally, it's opening. Okay, so you guys see here, this is my packet capture. So what this packet capture is saying, based on the current scenario, this is saying the PC, which PC? 192.168.10.10 is trying to reach this destination 172.16.10.10, right? But there is no response. You can see here. This is source IP address, this is destination IP address, and this is the ICMP type of the packet. और ये जब भेज रहा है ICMP पैकेट तो इसको कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। Let me just close it. So यहाँ पे कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। So एक चीज तो प्रूफ हो गई कि मेरी फायरवॉल ब्लॉक नहीं कर रही है, राइट। इट इज जस्ट सेंडिंग बट समहाउ आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। बट वो क्या चीज है जो ब्लॉक कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। द task is we just have to figure it out based on the packet capture or debug. Where is the problem? This we have to identify where is the problem. So how we can do this? So let's move to the second stage. Okay, so now my firewall is transmitting the packet, receiving the packet, but there is no reply coming from the far end for some reason. That's why there is no capture available. So let's move and do the second capture on this particular firewall, and let's see whether this particular packet is reaching to this firewall or not. Let's say suppose you have access. So let me just go there and try to do the packet capture again and see what is happening in this firewall. So it's again the same process is going to happen. I will go in the monitor, and after going in the monitor, I will just go in my packet capture, and the again manage filter will be the same. I just have to use the my IP, that is a, now this time ingress interface would be your 1 by 1, or might be it is tunnel because your packet is coming from the IPsec tunnel. So you don't know about the ingress interface, how it is going to land my firewall. So if you are very unsure about this, so you just use any interface, leave it the blank. Okay, so after leaving the blank, it is going to consider every interfaces and just put the 192.168. So 10.10, and destination will going to be 172.16.10.10. So now my packet capture has been defined here, and in this condition I leave the interface is any, and let's see from where it is coming. So now we are good. Now we just go and define the stages here. So stage is, I will just go, and it's a little bit slow.
Okay, so we're having a drop stage. It's slow. So let me just put drop. Okay. Now let me just click another filter. For some reason, it's become very slow. I don't know why. So let me just. Admin. Excuse me, sir. Yeah, please ask question. Sir, what is the default password of Palo Alto? Your voice is very low, Kamarjit. Sir, what is the default password of Palo Alto? Admin and username. Admin. Yeah, admin. I have tried, but today means lab is not means I am not able to log in. You're not able to log in? Yeah, find Palo Alto. Actually, I'm trying so many times. After just start the Palo Alto firewall, you just have to wait for 5 to 10 minutes or approx 10 minutes. Then it is going to take the password. Okay, sir. Okay. It is not going to take immediately after just starting the firewall. Okay. You just have to wait. So let me just try it. 192.168.1.122. Registrable. The firewall has been stuck for some reason. I don't know why. Let's see what is happening. This firewall is fine. It's working perfectly fine. Sir, will you cover BGP session, BGP routing? In Palo Alto firewall? Yes. There is no problem. If you guys really want to understand, I can tell how it is going to be configured. Any routing protocol, BGP, OSPF, if you're having any specific requirement to just understand, it's just 30-minute job. Okay. We'll understand everything. It's very easy to configure. I don't know why this firewall become unreachable suddenly. Oh my God. The plan was to make this session wonderful, but for some reason this firewall become unreachable. So let me see. Connected with this network. सर ये फायरवॉल के डिवाइस हार्डवेयर कितने की परचेस मतलब कितने अमाउंट रहती है सर इसकी पालो आल्टो की? डिपेंड करता है कि मॉडल टू मॉडल आपको कौन सा मॉडल खरीदना है। तो आपका लोअर मॉडल खरीदोगे तो सस्ता मिल जाएगा, हायर मॉडल खरीदो तो महंगा मिलेगा आपको। सर टोटली डिपेंड कि आपको कौन सा मॉडल खरीदना है।
ना सर, वो तो अलग बात है, मतलब अब महंगा सस्ता तो ये तो काफी महंगा होगा, सस्ता भी तो काफी महंगा ही होगा, दोनों हाँ टाइप हाँ, में। दोनों टाइप ही होंगे, सस्ता महंगा, महंगा सस्ता, वो टोटल डिपेंड करता है। तो इसकी जो प्राइसिंग है ना, you can get a quotation from direct Palo Alto sales team for the every firewall, क्योंकि generally they quote different country having a different price, right? इंडिया का कुछ और होगा, यूएस का कुछ और होगा, किसी और कंट्री कुछ और, डिपेंड करता है कि वहाँ लोकल टैक्सेस कितने हैं, राइट? एंड अच्छा, फ्रॉम वेयर डिवाइस वाज मैन्युफैक्चर्ड, सो इंपोर्ट सीआर सीआर में आता होगा सर ये सब टीआर मींस, प्राइस, एक आख अच्छा खोखा। सीआर यू मींस सीआर करोड़, राइट? यस सर। हाँ बिल्कुल। नहीं, करोड़ से भी कम है, ऐसा नहीं है करोड़ में आता है, लेकिन करोड़ से भी कम है, लेकिन हायर एंड फायरवॉल इज गोइंग टू बी टेक मोर देन 1 CRs। इतने सस्ते भी नहीं है नेटवर्क डिवाइसेस, बहुत महंगे हैं। सो लेट मी सी, अभी हो जाए हमारा सब कुछ। लेट मी ट्राई। सो ड्रॉप हमने अप्लाई कर दिया है, लेट मी जस्ट अप्लाई अनदर फिल्टर। So this is something I will just create for the firewall stage, and I'll put as the firewall here. So firewall stage, and the next stage for the receive stage. So I'll just put the RX stage here, right? And the next stage, what I'll do is transmit stage. So I'll use TX stage here, right? Once I'll do, I'll just on the packet capture here. So it is going to give me warning, right? यहाँ पे मैं यहाँ पे जाकर filter on कर दूंगा, prepress भी on कर दूंगा, एंड इसके बाद फिर से मैं दोबारा पैकेट कैप्चर करूंगा। देखो यहाँ पे अभी मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट? सो I'll go on this PC and I'll again initiate the packet. So यहाँ पे मेरा एक किस पे, देखो यहाँ पे आपको अपने आप ही आपको मिल गया, राइट? सो यू हैविंग द पैकेट कैप्चर हियर अवेलेबल। सो पहले केस में भी पैकेट कैप्चर मुझे मिल गया था, और दूसरे केस में मुझे पैकेट कैप्चर मिल गया। सो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आपका जो पैकेट है सम रीजन आपको यहाँ इस फायरवॉल तक पहुंच रहा है, बट इसमें देखते हैं इस पे आके आपका ड्रॉप हो जा रहा है। देख रहे हैं पैकेट, मतलब कुछ फायरवॉल में ऐसी चीजें हो रही हैं जो ड्रॉप कर रहा है। पहले आपका प्रोसेस हो जा रहा था, बट इस फायरवॉल पे आके ड्रॉप हो जा रहा है। यहाँ पे क्लियर मेंशन मिल गया है कि यहाँ पे आके पैकेट आपका ड्रॉप हो रहा है, लेकिन पहले वाली फायरवॉल पे ड्रॉप नहीं हो रहा था। पहले फायरवॉल पे सब कुछ ठीक था, आपके फायरवॉल में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब ये भी फायरवॉल को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया। तो लेट्स एक्सप्लोर कि इसमें क्या ड्रॉप मिल रहा है, और उसमें कुछ हमें हिंट मिल रहा है क्या। सो मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो जस्ट क्लिक इट ऑन डाउनलोड। सो यहाँ मेरा डाउनलोड हो गया पैकेट, ठीक है। सो मैं इसको खोलता हूँ अभी। Let me check internet connection. I think there is some kind of issue. It's very slow. I don't know why. Let me check. Internet is working fine or not. Yeah, this is fine. There's no problem with the internet. So this is also going to open in the Wireshark capture, and we'll see what is happening there in the particular firewall. Just give me 1 minute, guys. Let me switch my network. Just give me 1 minute. Let me stop my sharing. I'll switch my network and we'll connect. I believe there is some issue.
So just give me 1 minute. Let me check. So let me just do some action in the background to make it workable. So let me shut down these VMs. Okay. I believe there is a lot of loads or something. What I don't know what is happening. Okay. Let me try it again. Okay. Let me log in it again, this firewall. So the one firewall is 122 and another is 121. Let me just open them. Why? I'm in the GuiNet network now. Let me ping 192.168.1.121. It's not reachable. What happened? I'm really sorry, guys. I believe there is some issue in the lab. I don't know what happens, but we lost the reachability and I'm trying to restore it. So just give me a few minutes. Okay, so let me say it again. I just restarted the server. I don't know. It was just stuck in some processing stage. So let me try to log in it again. Kenny, we just have to start all the notes again. Sorry, it's going to take another 10 minutes. So you guys just have to bear with me. It was just stuck in somewhere. So I just restarted the CPU of the server. And then
It's again come online. We can discuss something else. If you guys having anything, we can discuss next 10 minutes. Any question, anything you guys want to discuss with me? कुछ भी इधर की बातें कर लो तब तक. Yes, tell me. Just I want to ask, it is not related to Palo Alto, but just I want to know, is it worth to get the knowledge about the F5 load balancer? It's worth. It's really worth. F5 LTM is something like in very demand in the market. So LTM, GTM is less having demand, but LTM having the more demands. LTM is also going to give similar kind of the opportunity what the firewall guys have right now. So if you having the good knowledge of the Palo Alto firewall, right, plus LTM and just good knowledge of the networking, then you are the super engineer. Sir. Right? Sir. Yes, sir. Yeah, tell me. सर ये बोल रहा था नेटवर्क सिक्योरिटी और सर्वर मतलब F5 डिवाइस लोड बैलेंसर ये सब तीनों अगर सर एक ही बंदे को आएगा तो तीनों का नौकरी तो एक ही खा लेगा. So this is what happening in the market. आप समझो मार्केट का ट्रेंड क्या है. मार्केट में अगर आप जाते हो कि मेरे को सिर्फ F5 आता है, so जॉब तो आपको मिल जाएगा, राइट? F5 पे जॉब मिल जाएगा. आप यू कैन बिकम अ वेरी गुड L3 इंजीनियर, F5 के L3 इंजीनियर बन जाएगा. उसके बाद क्या? यू स्टक ऑन दिस लेवल. आप एक लेवल तक आपको इंडिया में हो तो 25 लाख की सैलरी आपको मिल जाएगी मैक्सिमम. व्हाट आई एम ट्रेइंग, अगर आप बहुत अच्छे F5 के इंजीनियर हो, आपकी अच्छी कंपनी ने हायर कर लिया, तो इतना सैलरी आप जा सकते हो. उसके बाद क्या करोगे आप? व्हाट नेक्स्ट? आपको अगर बनना है नेटवर्क आर्किटेक्ट बनना आपको, राइट? आपको नेटवर्क कंसल्टेंट बनना है, नेटवर्क डिजाइनर बनना है, तो क्या करोगे आप? तो आपको बाकी चीजें आनी चाहिए ना. Even nowadays, if you will go through any job posting, they are require multiple skills. Not only if you have only Palo Alto skill, then I don't think jobs, they will select. Trust me. Yeah. Yes, they are not going you to should even have another like LTM or something about the routers, which is everything you should know. समथिंग बहुत सारी एमएनसीज कंपनी होती है जहाँ नेटवर्क की टीम राउटिंग स्विचिंग की अलग, सिक्योरिटी की अलग और सर्वर की अलग रहती है. सबको एक ही में सर्वर यू कैन पुट अलग, सर्वर की टीम अलग होती है. एग्री, सर्वर की टीम अलग होती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. सर्वर आप छोड़ दो, बट आपका जो नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी की टीम है ना, वो आपको रखना ही पड़ेगा. वो आपको नॉलेज आपको आना ही चाहिए. मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए. नहीं आती है तो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ आपका. यस सर. So should we learn any another firewall along with Palo Alto? हाँ, आप FortiGate सीख सकते हो. FortiGate की बहुत डिमांड है Palo Alto के बाद. Yeah, even it is cheaper than Palo Alto. Yes. FortiGate की बहुत डिमांड है मार्केट में. FortiGate की डिमांड है, चेक पॉइंट की डिमांड है. सो ये दोनों फायरवॉल आपको आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा in demands हैं. So you can learn it. So as far as the features are concerned, most of features are the same as the Palo Alto in FortiGate, right? Right. Most of the features are the same, but few things you'll find in difference. Like everything we can do in the Palo Alto and the FortiGate, but the way of working is just a little bit going to be changed. So even you know the Palo Alto, having a good knowledge of the Palo Alto, and you're just trying to explore the FortiGate, you'll easily understand that there is no problem. Just you have to keep aware about some kind of the terminologies and how to create the policy, how to create the NAT and some different term. But rest of the all the concept is going to be same. The security feature, quality, application ID, and the you just have to do any kind of the URL filtering, web filtering. That all is going to be same. Hello. संजय, you asking something? संजय, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही संजय. मैं ट्राई कर रहा हूं तब तक इसको कि ये लॉगिन हो जाए, बट Sir. Yeah, tell me. Sir, what is the future perspective of SD-WAN? Why it is necessary for network domain? SD-WAN, right? Yes, sir.
Okay, just give me 1 second. I'll explain. Let's look login. So just let me just log in. Let me just, yeah, it's login. Let me just quickly log into the firewall first. 21, 22. So I'll सर just take a, हाँ बताइए. सर एक और थोड़ा डाउट था, पूछना था सर, ये बोला था वो हाँ जैसे कि नॉर्मल राउटर होते हैं जो पहले थे, अभी जो कुछ इंक्रीज होकर SD-WAN आ गए हैं, फिर हाँ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन ये जो नेटवर्क में यूज होता है, तो ये पाइथन का यूज आने से हेल्प क्या होती है सर पाइथन से नेटवर्क में? पाइथन से आप नेटवर्क ऑटोमेशन करते हैं आप. पाइथन इज गोइंग टू हेल्प टू डू द नेटवर्क ऑटोमेशन. आप बहुत सारे ऐसी चीजें कर सकते हैं पाइथन से जो आप मैनुअली करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. सो पाइथन इज गोइंग टू हेल्प टू डू क्विकर जॉब्स. ऑटोमेट कर देगा चीजों को. आपकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनको सिमिलर टाइप ऑफ जॉब टास्क उनसे करवाना है तो बहुत इजीली तरीके से वो कर देंगे आपको. सर उसके लिए तो SD-WAN है ना, उसके सॉफ्टवेयर डिफाइन पे? सॉफ्टवेयर डिफाइन पे SD-WAN है, बट आपको थर्ड पार्टी API वगैरह इंटीग्रेट करना है तो देन यू रिक्वायर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जेसन चाहिए आपको आना, एनसिबल चाहिए आना, पाइथन चाहिए आना. सो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है सारी चीजें. थोड़ा एक शॉर्ट टर्म मैं में सर बताएंगे, मतलब एक मतलब क्या है, मतलब क्या नॉर्मली राउटर पे भी ये मैं पाइथन एक काम लैंग्वेज? करता हूँ ठीक है. अभी इसको थोड़ा ट्राई करते हैं सत्यम समझने के लिए. मैं जो SD-WAN का सेशन जब भी होगा ना हमारा जस्ट होगा ठीक है, उसमें पूरा मैं डिटेल में बता दूंगा. शॉर्ट में क्या, पूरा डिटेल में बता दूंगा कैसे कैसे होता है ठीक है. आपको मैं ज्वाइन कराता हूँ, यानी एवरीवन इज गोइंग टू ज्वाइन ठीक है. चलो अभी लॉग इन हो गया. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल डिटेल में. तो अभी देखो ये हमारा पैकेट कैप्चर खुल गया एंड दिस पैकेट कैप्चर इज गोइंग टू बी ओपन इन माय लोकल पीसी. एंड यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि आपका इको रिप्लाई तो भेज रहे हैं, मतलब इको रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं बट रिप्लाई हमारा कहीं रिमोट से नहीं आ रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पीसी आल्सो, राइट. सो यहाँ तक आपका पैकेट पहुंच चुका है. द पैकेट हैज बीन लैंडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीसी and it reached to this firewall, but it is just going to destination, but there is no reply. So where is the issue? Still there is no any clue to figure out the issue. Where is the issue, right? So we just have to figure out where is the issue. So अभी एक चीज समझ आ गया कि पैकेट कैप्चर से हमारा काम नहीं हुआ, राइट. वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि इशू कहाँ पे है बॉस. तो व्हाट इज द नेक्स्ट? तो पैकेट कैप्चर की अपनी लिमिटेशंस हैं. ये बता तो दिया कि ड्रॉप हो रहा है, बट किस वजह से ड्रॉप हो रहा है हमें ये नहीं पता चल रहा है. we having the like logs कि मेरा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, but why it is getting dropped we don't have any logs, means we don't have any clue. So हमें कैसे clue को figure out करना है, right? This is the next step कि हमें clue कहाँ से निकालना है. So उस clue को निकालने के लिए आपको अब debugging चलानी पड़ेगी. So let's start with debugging. और debugging आपकी जो चलेगी that is going to on CLI. So मैं CLI login कर लेता हूँ और देखो debugging कैसे चलती है और कैसे debugging एक एक चीज बता देगा आपको कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. अगर आपको पैकेट कैप्चर आता है तो मैं बिना चेक किए फायरवॉल की कोई मेरे फायरवॉल में 1000 पॉलिसीज हैं, राइट. माइट बी 1000 पॉलिसी, 2000 पॉलिसीज, बिना किसी पॉलिसी को चेक किए हुए मैं अपने इशू को फिगर आउट कर लूंगा. और मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी एक एक स्टेप्स. तो एक 1 आवर और लगेगा, आप लोग को थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा मेरे साथ, बट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे होता है. सो अभी तक हमें ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. बस हमें ये पता है कि हाँ प्रॉब्लम तो है, बट वेयर इट इज वी डोंट नो. So 192.168.1.2 को लॉगिन कर लिया. आई थिंक 1.1.1 को करना है. So let me just go there. So 192.168.1.121 admin, and then I'll just go there and I'll log in. Right. So how debug is going to happen? So we having the packet capture debug log. So मैंने ये फाइल पहले से खोल रखी है, देखो. तो इस डिबग फिल्टर को जब भी आप इनेबल करो तो आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम फ्लो बेसिक आपका डिबगिंग होती है, राइट. तो ये पूरा सेट ऑफ डिबग होता है जैसे आपको चलाना होता है डिबग, राइट. तो ये पूरा फ्लो बेस्ड डिबग्स होते हैं जिसके अंदर
आपको फिर से फिल्टर सेट करना पड़ता है, किस पैकेट कहाँ से किस सोर्स से आपके फायरवॉल पे आएगा, और जब पैकेट आपके फायरवॉल पे आएगा किस डेस्टिनेशन पे जाएगा, क्या इसका पोर्ट्स होगा, व्हाट इज द पोर्ट्स, व्हाट इज द प्रोटोकॉल नंबर, राइट। इसका डेटा फिल्टर आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, राइट। इसमें आपको पैकेट कैप्चर इनेबल करना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द सीक्वेंस। मैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, यू जस्ट हैव टू फॉलो द डॉक्यूमेंट। और करना कैसे मैं करके दिखाता हूँ। एक सबसे पहले हमें क्या डिबग करना है, वी जस्ट हैव टू फिगर क्या क्या। संजय जी, संजय जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर मुझे आ नहीं रही है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, या तो मेरे साइड से प्रॉब्लम है या तो आपकी साइड से प्रॉब्लम है। हेलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, सो आप चैट में पूछो, मैं बताता हूँ, ठीक है। चैट आप मेरे को बताओ, चैट में बताता हूँ मैं आपको, आप मैं चैट में पूछो। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिबग है, डिबग में आपको क्या है कि ये डेटा पैकेट्स, डेटा प्लेन पैकेट कैप्चर करना है, तो इसमें आपको फिल्टर सेट करना है। जैसे आपने यहाँ फिल्टर सेट किया था, जैसे हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग में जाके फिल्टर सेट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको फिल्टर सेट करना पड़ता है। इस फिल्टर में आपको बताना पड़ेगा कि आपका पैकेट कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जाना है इसको, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। उस फिल्टर के साथ साथ आपको डेस्टिनेशन पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल नंबर। फिर आप इस फिल्टर को ऑन करना पड़ता है, सेम प्रोसेस है जैसे यहाँ पे फिल्टर को आप ऑन कर रहे थे, वैसे ही आपको फिल्टर को ऑन करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ये संजय जी शेयर कर देंगे, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। सो यहाँ से आपका फिल्टर यहाँ से ऑन हो जाएगा, राइट। फिल्टर ऑन जो यहाँ से कर रहे थे आप कमांड से करोगे, फिल्टर आपका सेट होगा, फिल्टर आपका ऑन हो जाएगा, जो ऑफ है अभी ऑन हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपका फिल्टर ऑन हो जाएगा तब आपको फिर से डिबग फ्लो बेसिक चलाना है आपको। अब आप डिबगिंग यहाँ पे चलाना है और इसके बाद आपको डिबग को ऑन करना है, राइट। दिस इज द लास्ट स्टेज, देन यू हैव टू इनिशिएट द ट्रैफिक। सो दिस इज ऑल प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो मैं गया यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद मैं इस पे फिल्टर को मुझे को सेट करना, राइट। सो जस्ट हैव टू फॉलो द कमांड्स, जो भी आपके पास कमांड है। तो आपको यहाँ पे डिबग, मुझे क्या करना, डेटा प्लेन कमांड लिखनी यहाँ पे, एंड देन पैकेट डायरेक्ट सेट फिल्टर। फिल्टर में क्या सेट करना, मेरा सोर्स है कहाँ पे, सोर्स मेरा है ये वाला, और डेस्टिनेशन है दिस इज 172.16.10.10। सो दिस इज माय सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो मैं यहाँ पे सोर्स डाला, सो सोर्स सेट फिल्टर मैच सोर्स 192.168.10. Sorry, source 192.168.10.10 and destination we just have to put कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। debug data plane packet direct set filter match source 192.168.10.10 destination। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन डालना है, डेस्टिनेशन में 172.16.10.10 ये आपका डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमें यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट। वी जस्ट हैव टू पुट द डेस्टिनेशन एड्रेस। सो डेस्टिनेशन में यहाँ डाला, राइट। और यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स, राइट। सो यू कैन लिव बेस्ड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं करना चाहो तो आप छोड़ दो इसको, आप जस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन बेसिस पे कोई भी प्रोटोकॉल जाएगा दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड, राइट। सो मैंने अभी यहीं पे छोड़ दिया, आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी एडिशनल फील्ड, राइट। सो दिस इज माय सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई हैव डन। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस फिल्टर को मुझे ऑन करना है। सो आई अगेन गो इन द सेम सेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन लाइन जो भी हमारे पास है, एंड यहाँ पे सेट फिल्टर ऑन कर दूंगा। सो दिस फिल्टर इज गोइंग टू बी ऑन। सो मेरा फिल्टर भी ऑन हो गया। सो अगर आप फायरवॉल पे जाओगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए अपने आप फिल्टर ऑन हो गया, और इस फिल्टर के अंदर जो हमने पैरामीटर मैच किया वही पैरामीटर यहाँ पे दिखा रहा है। दिस इज सेम थिंग, आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप CLI से कर सकते हो, बट यहीं पे आकर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो फिल्टर आपका यहीं पे सेट होगा, आप CLI से भी करोगे तो भी या GUI से भी करोगे तो भी आपका फिल्टर आपका यहीं पे आकर सेट होगा। तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी सेम। अब बात आती है कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डिबग्स, राइट। सो डिबग स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा, डिबग, राइट, डेटा प्लेन
And this data plane, you just have to put the packet diag, right? And set log feature flow basic. So अभी भी आपका डिबग ऑन नहीं है, आपने डिबग बस लगाया है फ्लो बेसिस के हिसाब से कि जिस तरह से आपका पैकेट फ्लो होगा. फ्लो बेसिक मतलब ये फ्लो बेसिक, कैसे आपका पैकेट फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे पैकेट जा रहा है, कहाँ कहाँ आपका क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, राइट? सो this is my flow basics. So what I have to do, I just apply this particular packet capture, and next I will do the clear log. So if any clear log I have in my previous firewall filter, so that need to be clear. So मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई log है नहीं, but आपके पास अगर कोई है पहले से filter लगा हुआ है and you want to clear पुराने logs को, you can just use this command, data plane packet diag, right? So clear log. So इस तरीके से आपके log सारे clear हो जाएंगे. And then once your log is clear, your filter is set, right? These two commands is showing to set your filters, right? And after setting this filter, you make this filter on, and then you enable the debug by running this command. Now you just have to on this debug, and the moment you on this debug, your debug is initiated, and then you have to initiate the traffic. And once the traffic initiation has been completed, 4 seconds, 5 seconds, or 10 seconds, you just have to make sure of this debug. So let me just do that. So I will just go and I will run this command, debug data plane, right? Packet diag and set log on. My debug is on. So see, packet log is enabled. So debug is enabled. So what I have to do now? So I will go in this particular PC and I will generate the live traffic. So let me just do that. So I will just go in this PC 123. And after going CMD, and I will generate the traffic for the destination for site B 172.16.10.10. So this is going to ping for 4 packets. So let's wait. So this is going to be complete within few seconds. So my packet capture has been completed because the ping response has been all done, and there is 100% loss. There is no success rate, right? So what next? So now my firewall must have done the packet capture because the packet capture is already enabled, debug is already enabled. So next step, I just have to make sure my debug is going to be off. So I'll just run this command. Let me show you. So I will go debug data plane packet diag set log off. So this is going to off my debug. So once debug my off, what next? So next is आपको इस debug के अंदर क्या capture हो उसको देखना है. So how can we check that? You having a 2 command, less and more. You having a less command and tell command, right? So once you use the less command, you just having the option like MP logs. There is a DP log that was quite old. Now we're having the MP logs. So you can use either less command or tell command. So I'll explain what is the meaning of the tell and what is the meaning of the less. So अगर आप less command use करते हो, that is going to give you the full logs information जो capture हुआ Palo Alto firewall में. अगर आप tell use किया, तो tell is going to give last 5 line configuration. Whatever the last 5 line configuration, it is going to give you the in tell commands, right? So you can see last 10 lines, it is going to give you the configuration, not all. So tell आपको नहीं use करना, you just have to use the less command. So less, and then you just have to use the MP logs. So MP logs, and after that, you have to figure out the file name, which is pan_packet_diag.log from this particular filter. So let's help me to figure out where this file is. Sorry, let me just go there. Search खोजते हैं कहाँ पे मेरी फाइल है. मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ. So आप लोग भी देखो, मुझे इस फाइल को खोजना है, कहाँ पे है इसमें पर्टिकुलर सेक्शन में. तो आप लोग को दिखे तो बताना मुझे कौन से सेक्शन में है, कौन से ब्लॉक में है. DP
pan_packet लेफ्ट साइड में किसमें है सर, पेन पैकेट लेफ्ट साइड में pan_DHA के नीचे स्ट्रीम लिस्ट में, इसमें कौन सा है, किसमें है, इसमें है, इसमें है, एजेंट में है, एजेंट जो स्किन है उसमें, हाँ इसमें है। confined sir, yeah. हाँ ये वाला ठीक है ठीक है। सो ये मिल गया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको खोला, ठीक है, तो देखो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे लिए आ ही नहीं रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा है, राइट, सही, मेरे लिए यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज कि हमने लॉग तो कैप्चर कर लिया लेकिन लॉग एग्रीगेटेड नहीं है। सो इनको लॉग कैप्चर करने के बाद लॉग को आपको एग्रीगेट करना होता है। तो एग्रीगेट कैसे होते हैं, एग्रीगेट करने के लिए आपको एक कमांड चलाना पड़ता है, ठीक है। सो जो भी आप डिबग कैप्चर करो उस पर एग्रीगेट करना पड़ता है। तो इस कमांड चला दो आप, डिबग डेटा प्लेन पैकेट डायग एग्रीगेट लॉग्स। सो आपके सारे लॉग एग्रीगेट हो जाएंगे, तो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखेंगे, राइट। सो देखो यहाँ फाइल नेम भी आपको आ गई। अब अगर एग्रीगेट करते हो तो फिर आपको जाकर ये कमांड चलानी है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। अब देखो ये एक्चुअल आपका क्रस है, पूरी जितने भी हमने 1.5 घंटे समय बर्बाद किया उसको समझने का, जो आपका डीबग का अंडरस्टैंडिंग। तो देखो इसमें जो भी पैकेट फ्लो में मैंने बताया था अभी तक का, दैट ऑल इज गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर डीबग। सो चलो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपका पैकेट कहाँ से गया और कैसे कैसे प्रोसेस हुआ इन पर्टिकुलर फायरवॉल के अंदर। तो देखो यहाँ पे ये आपका पैकेट है, आपने डिबग चलाया, तो देखो क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग विद द पैकेट्स, द पैकेट रिसीव एट द इनग्रेस स्टेज। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द पैकेट रिसीव इन इनग्रेस स्टेज। कौन सा इनग्रेस स्टेज होता है, ये वाला होता है। जब आपका पैकेट पहला रिसीव होता है तो इसको इनग्रेस स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पैकेट यहाँ पे रिसीव हुआ, राइट। रिसीव होने के बाद क्या हुआ, अब देखो ध्यान से। सो वंस द पैकेट हैज बीन रिसीव, व्हाट द नेक्स्ट स्टेज, सो द नेक्स्ट स्टेज इज कि आपके पैकेट के जो भी लेयर 3 आईपीज हैं, जो भी लेयर 2 आईपीज हैं, जो भी आपके वर्जन है, प्रोटोकॉल है, वो सारे आपके एक्सट्रैक्ट किए गए यहाँ पे। यही चीज लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर, देखो ये सारी चीज हुई यहाँ पे। तो आपका इनग्रेस स्टेज में पैकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इनग्रेस स्टेज में आपका पैकेट आ गया, व्हाट नेक्स्ट, सो वंस यू डन विद द इनग्रेस स्टेज कि आपका सब कुछ सही है, सो इनग्रेस स्टेज में दैट इज फाउंड दैट कि आपका कोई भी फ्लो यहाँ पे एक्टिव नहीं है, एंड इन क्यू टू क्रिएट अ सेशन मीन्स देयर इज नो सेशन इज क्रिएटेड। सो इफ देयर इज नो सेशन क्रिएटेड, माय पैकेट विल ऑलवेज गो इन स्लो पाथ, मेरा फास्ट पाथ से स्लो पाथ में जाएगा। दिस इज द लाइक फ्लो, कि मेरा कोई सेशन नहीं है तो फास्ट पाथ से ये सीधा स्लो पाथ में जाएगा, तो जस्ट क्रिएट द सेशन। तो मेरा पैकेट कहाँ आ गया, यहाँ से सीधा मेरा स्लो पाथ में आ गया, लिखा हुआ यहाँ पे देखो साफ साफ। सो दिस इज माय स्लो पाथ। तो यहाँ पे स्लो पाथ स्टेज में आ गया। स्लो पाथ स्टेज में आने के बाद क्या किया इस पर्टिकुलर पैकेट ने, स्लो पाथ में स्टेज में आने के बाद, मैं ये वाला खोल लेता हूँ, पैकेट इसमें ज्यादा क्लियर है। स्लो पाथ में आने के बाद इसने क्या किया, दे अगेन हैविंग द लेयर 2 इंफॉर्मेशन, दे अगेन हैविंग द लेयर 3 इंफॉर्मेशन कि आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रोटोकॉल देखो 1 है क्योंकि आईसीएमपी का है, ठीक है, एंड आईसीएमपी यहाँ पे लिखा भी हुआ, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू डू इन स्लो पाथ, पहला ये फॉरवर्डिंग लुकअप चेक करेगा एज पर द पैकेट फ्लो, दिस इज गोइंग टू चेक द फॉरवर्डिंग लुकअप कि मेरा फॉरवर्डिंग लुकअप क्या है। तो राउटिंग चेक करेगा, दिस इज सेम, दे आर गोइंग टू डू द पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग और जो भी आपका राउटिंग है दैट इज गोइंग टू चेक, और वो आपके लिए कौन से एप्लीकेशन के लिए, जो आप पिंग के लिए आप कर रहे हो। फिर वो सेशन लुकअप करेगा, सेशन सेटअप करेगा, पॉलिसी लुकअप करेगा, वो आपकी जो भी पॉलिसी है उसको आप चेक करेगा और सेशन को सेटअप करने की कोशिश करेगा कि मेरा सेशन कैसे बनेगा, क्या होगा। तो ये 3 स्टेप, नैट, पॉलिसी एंड आपका सेशन को क्रिएट करेगा और फाइनली जाके फास्ट पाथ में इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या किया इसने, आईसीएमपी आया ट्रैफिक आपका, इसने राउटिंग चेक किया, सेशन सेटअप करने के लिए आपको देखा कि मेरा किस इंटरफेस से ट्रैफिक आ रहा है और कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है टनल इंटरफेस पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज क्लियरली मेंशन दैट कि द ट्रैफिक इज ट्राइंग टू गो ऑन टनल इंटरफेस। पॉलिसी लुकअप एंड मैच इन द इंडेक्स 0, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपकी फायरवॉल पे पॉलिसी लुकअप किया एंड आफ्टर लुकिंग द पॉलिसी इट इज मैचिंग इंडेक्स 0। सो इंडेक्स 0 का मतलब होता है कि जो भी आपके रूल्स होते हैं फायरवॉल पे, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जो पहला रूल होता है इंडेक्स 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है। तो इंडेक्स 0 पे जो पॉलिसी होगी उसको मैच कर रहा है, मतलब 1 पे जो पॉलिसी होगी उसको मैच कर रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कौन सा पॉलिसी मैच कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू चेक हियर इन द पॉलिसी and you see this is the index 0 site to site VPN and this is the policy it is matching, clearly saying
ये पॉलिसी मैच कर रही है, तो इसका इंडेक्स हमेशा आपका 0 होगा और इसका 1 होगा और इसका 2 होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, तो कभी भी आपको इंडेक्स दिखे तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, दिस इज द एक्चुअल पॉलिसी आपकी जो फायरवॉल में बनी होती है, ये इंडेक्स हो गया, राइट। सो आपको यहाँ पॉलिसी भी मिल गया, आपको यहाँ पे सेशन सेटअप भी हो गया कैसे भेजना है, और आपकी राउटिंग भी लुकअप हो गई। व्हाट नेक्स्ट? तो अब आपका जो पैकेट है, स्लो पाथ में आपका पैकेट था, यहाँ सेशन क्रिएट हो गया, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सेशन क्रिएटेड एंड इन क्यू टू इंस्टॉल इन द फास्ट पाथ। इसका मतलब ये हुआ इन क्यू टू इंस्टॉल इन द फास्ट पाथ कि वंस आपने सेशन क्रिएट कर लिया तो आपका यहाँ तक काम हो गया, एंड जस्ट यू हैव टू गो एंड इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग इन द फास्ट पाथ। आपको जाके फास्ट पाथ में इंस्टॉल करना है इसको। तो वही आपका स्लो पाथ से पैकेट आपका फास्ट पाथ में आ गया। सारी चीजें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंड फास्ट पाथ में आने के बाद फिर से आपका पैकेट का पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये पैकेट कहाँ से जाएगा, और ये जाके आपका फास्ट पाथ में आपका इंस्टॉल हो गया। एंड फास्ट पाथ में इंस्टॉल होने के बाद इसकी राउटिंग लुकअप होगी, कैसे आपको जाना है डेस्टिनेशन पे, कौन सा वर्चुअल राउटर के थ्रू जाना है, कौन सा आपका एग्जिस्ट इंटरफेस होगा, और आपका पैकेट इंटर टनल इनकैप्सुलेशन स्टेज, और जो भी आपका टनल इंटरफेस है उसके थ्रू ये पैकेट आपका बाहर चला जा रहा है। मतलब यहाँ तक फास्ट पाथ से होकर ये पैकेट आपका टनल में या इंटर हो गया और उसके बाद आपका पैकेट बाहर चला गया। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब आप फास्ट पाथ तक आ गए और फास्ट पाथ में आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सारी चीजें आपको फास्ट पाथ में बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे फाइनली ट्रांसमिट द पैकेट ऑन दिस पर्टिकुलर साइज एंड द पोर्ट, साफ साफ लिखो, ये फास्ट पाथ का ही है। देखो आप लोग यहाँ पे, सो फास्ट पाथ में आपका सब कुछ रिजॉल्व हो गया, सारी चीजें हो गई, एंड पैकेट आपका ट्रांसमिट हो गया। दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि योर पैकेट इज रेडी टू फ्लाई। तो इट इज शोइंग दैट कि आपकी जो पर्टिकुलर ये फायरवॉल है जहां पे हम लोग पहले थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस फायरवॉल एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। सो दिस इज द कंक्लूजन कि यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पैकेट आया और ये ट्रांसमिट कर रहा ओवर टनल इस फायरवॉल तक। बट इस फायरवॉल पे क्या हो रहा है, we just have to figure it out कि इस फायरवॉल पे अब मेरा क्या हो रहा है, ये फायरवॉल मेरे लिए क्या कर रही है। तो अब इसके लिए भी हमें सिमिलरली जाकर क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिबग लगाना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा। तो चलिए हम वो डिबग लगाने की कोशिश करते हैं कि इस डिबग में क्या लगता है। सेम प्रोसेस होगा, मैं अब जाऊंगा दूसरे फायरवॉल पे और मैं पूरा डिबग का प्रोसेस सेम करूंगा, एंड विल सी कि ये फायरवॉल अब क्या करती है। तो मैं यहाँ गया एंड मैं यहाँ पे डिबग लगा लेता हूँ। तो यही डिबग का पूरा प्रोसेस रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिल्टर भी सेम लगेगा। तो डिबग डेटा प्लेन पैकेट डायरेक्ट सेट filter match source that is going to 172 that nahi, source is 192.168.10.10 and destination is going to be 172 dot, let me see, destination, and this is 172.16.10.10, राइट। इस फिल्टर को हम ऑन कर लेंगे। अगेन फिल्टर लगाने के बाद हम फिल्टर को ऑन भी करना पड़ता है। सो आई विल ऑन दिस फिल्टर। आपको ऑफ करना तो ऑफ का भी ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से डिबग लगाना है। सो डिबग डेटा प्लेन सेट लॉग फीचर फ्लो बेसिक्स, ये कमांड आपको चलानी है, एंड देन यू जस्ट हैव टू, अगर आपको लॉग्स क्लियर करने हैं पहले से, इट इज नॉट मैंडेटरी इन माय केस बिकॉज हम पहली बार कर रहे हैं तो पहले से कोई लॉग है नहीं, बट आपको बेस्ट प्रैक्टिस से कर लेना, आपको प्रोडक्शन में करना है तो, and then you just have to set log on, set log on। मेरा फिल्टर यहाँ पे ऑन हो गया। अब यहाँ ऑन होने के बाद फिर से मैं जाऊंगा इस पीसी पे, इनिशिएट करूंगा ट्रैफिक कि बॉस जस्ट सेंड मी अगेन ट्रैफिक। सो ये पीसी है मेरा जहाँ पे मेरा यूजर है, यही है। सो मैं यहाँ पे जाकर फिर से इनिशिएट किया, जस्ट वेट। So now 4 packet has been sent from this particular PC, and now we just have to check whether this 4 packet capture has been done or not by the another side of the firewall. This is the next step we have to understand. So my packet earlier, when I have done this packet capture on this particular firewall, this firewall was able to capture the packet, and it clearly told to me my packet is traveling via the tunnel interface because it's transmitting via the tunnel interface.
and I don't know this firewall is receiving or not. So let's verify whether this firewall is receiving this packet or not, and after receiving, what it is doing. So let me just check it. So I will just first stop the packet capture. So let me just off this particular packet captures. My packet log has been disabled. And once we done this, I just have to aggregate the log. So again, I have to aggregate this log. I just have to run this particular command, debug data plane packet diag, this one. So debug data plane packet diag aggregate logs. So this is going to aggregate it. And once this is going to aggregate it, I have the file name already. So I just use this particular command, less mp log, right? And just put the file name and just see. So now again, I have the full view of the packet flow. So here it is able to capture the packet, but might be we'll find some funny thing here. So let's understand one by one. So now here you see that it is again saying your packet has been received at ingress stage. The same story means this firewall again received the packet in ingress stage, but this time this PA or PA02 firewall received that particular packet. So once this particular firewall received that particular packet, what next? The next step is after receiving, it is just extracting the information, layer 2, layer 3, ICMP, whatever they are trying to do, they done everything. And after doing this all, it is saying that there is no active flow found in queue to create the session. So it is trying to create the session. So again, it will move to the slow path. If there is no session, so मेरा packet हमेशा slow path में ही जाएगा. Slow path में गया, slow path में जाने के बाद it is checking कि ठीक है, your packet is coming from this particular IP address, right? MAC address, this is the IP address, right? इसने सारा कुछ routing check किया with application policy check किया and it matched in index 0 and the packet has been dropped. Session setup failed. You got this message? So this firewall is saying for this particular packet, this is getting dropped in the slow path stage only. It is not creating the fast path stage. And why it is dropping? Because one of the policy lookup happened and this policy is saying the index rule 0 match, and after matching this particular index 0, session deny logs found and then packet drop. So it is clearly showing there is some issue on the PA02 firewall where one rule is created. In that rule index 0. So index 0 again, the rule number which is on the 1 position. And that is having the issue. And this is the reason we are not able to send the traffic. So let me just go on the PA02. So ये मेरा PA02 है और यहाँ पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक टेस्ट पॉलिसी बना हुआ है और इसके अंदर मेरा एवरीथिंग डिनाई है और वही चीजें बता रहा है. अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा, जैसे ही मैं अलाउ कर दूंगा इसको, मेरा सब कुछ चल जाएगा. लेट मी शो यू. जैसे ही मैं इसको अलाउ कर दूंगा, जो मेरा पिंग नहीं हो रहा था वो पिंग होने लगेगा. तो ये मेरा फायरवॉल मींस मत वो ये जीयूआई और वो कमांड बेसिस है ना सर? नहीं, वो डिबग है. डिबग बेसिस पे आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है. डिबग से आपने डिबग को पढ़कर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि वेयर इज द इशू. हाँ ठीक है, ठीक है. सो आपको मैनुअली कुछ भी पॉलिसी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं जाके राउटिंग भी नहीं चेक किया, मैं जाके कोई पॉलिसी भी नहीं चेक किया. मैंने सिर्फ डिबग को पढ़ा, समझा और मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड मैं जाके उसको फिक्स कर दिया. मैं इसको अलाउ कर दूंगा. अब जाके मैं इस पीसी से पिंग करूंगा. सो नाउ इट इज गोइंग टू वर्क. यू कैन सी इट इज गोइंग टू वर्क. See, it is start pinging. So this was the issue, right? How we can figure it out? Based on the debug logs. So अगर मैं दोबारा जाकर debug अब लगाता हूँ इस पीसी के अंदर, मैं जाके अगर दोबारा debug लगाऊंगा तो देखना इसी पैकेट का फ्लो हमारा चेंज हो जाएगा. Let me show you again. So मैं अगर गया यहाँ पे तो जो हमारा ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस लॉग को ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि जब हम अभी इसको अभी ये स्लो पाथ में स्टक हो जा रहा था, बट अभी दोबारा डिबग लगाएंगे तो देखना भी फास्ट पाथ में जाने लगेगा. ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार ऑन कर लेता हूँ फिर से. ऑन करने के बाद मैं यहाँ से 4 पैकेट्स भेजता हूँ.
ठीक है। सो यहाँ पे भेजने के बाद मैं एग्रीगेट कर देता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। So this is going to be off, right? Let me just aggregate again, and after aggregate, let me just see here. ये नहीं चलानी मुझे, हाँ ये वाली कमांड चलानी है। देखो अब यहाँ पे in document it is showing DP log, and here you specified MP log. So is that was the old document, the old version 7.0. It was having such kind of feature. okay. DP logs. Latest version only the MP logs that has been replaced. Okay. So let me just clear the logs because the logs are already available. So it is showing the old logs also. So let me just clear the logs. So this is my firewall. Let me just go here. आप लोगों को समझ आया, मतलब it is very clear, right? I believe आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया. Let me just clear log. The log has been cleared. So once the log has been cleared, what I have to do? Let me just try to see. सर ये क्लास का मतलब आज डेमो तो है, मतलब बीच का कोई इंटरसेप्ट कोई पार्ट है या फिर This is the last, just for the general like discussion for the troubleshooting. This is like end of the session, we can say. Or after that, you just wanted to do some kind of the troubleshooting. So वो just understanding के लिए है. So it is not something day one. It is you can say last day. लास्ट डे हाँ, तो जो भी हम बचा है, we can discuss it, right? वही सर मैं बोला कि इतना स्टार्टिंग इतना हैवी है, इतना हैवी है तो नहीं, just for the इसको बोलते हैं कि पब्लिक डिमांड पे, राइट? सो डिमांड है था कि हमें सीखना है, सो हमें सिखाना है। हाँ हेलो सर, यावर बोल रहा हूँ। हाँ जी, और बताइए। अरे सर, उस पे लिखा हुआ आया था कि एनरोल न्यू बैचेस, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने अभी, मुझे रामू ने जाके क्लास कर लिया, भाई उस पे तो लिखा था लाइव है। अरे आप लोग अभिषेक सर ने बताया नहीं क्या? नहीं सर, लगा कि डेमो है आज। अच्छा, हाँ डेमो है, तभी मुझे भी लगा था सर। अब मुझे रामू ने बताया, यार चल नहीं रहा ना, वो तो डेमो है, ऊपर लिखा है न्यू बैचेस लाइव फॉर न्यू बैचेस करने चल रहा है सर। वो कर देते हैं लोग, मार्केटिंग वाले हैं ना, वो कर देते हैं कभी कभी ना, गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बताया था कि इट इज ट्रबल शूटिंग, बट उनको लगा हुआ कि मैं बोला था कि सबको लिए ओपन कर देना, जो भी मेरे पुराने कैंडिडेट हो, दे वांट टू ज्वाइन सो दे कैन गेट बेनिफिटेड। जो कुछ नया होता है तो मैं सबको ओपन कर देता हूँ, बट वो ब्रॉडकास्ट में गड़बड़ हो गया। फिर कोई बात नहीं सर, ठीक है, होता है। आप लोग ज्वाइन कर लिया करो, 5 मिनट ज्वाइन करके छोड़ दिया करो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग आते तो ठीक रहता है। मैंने सर को बोला था, अभिषेक सर को, कि कम्युनिकेट टू ओल्ड रेगुलर बैचेस पीपल कि आज की क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा सीखना था, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। डिबग, डेटा प्लेन, पैकेट डायरेक्ट, एग्रीगेट लॉग्स, राइट? तो एग्रीगेट लॉग्स हो गया हमारा, and then we just have to list MP logs, this one, ठीक है। सो अब इसमें देखते हैं हम लोग, क्लियर फिल्टर कर दिया था हमने। देखो अब यहाँ पे देखिए, अब आपका यहाँ पैकेट फ्लो देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जो पहले हमारा पैकेट था, इट वाज जस्ट ड्रॉपिंग आफ्टर द इनग्रेस स्टेज, इट वाज जस्ट गोइंग टू द स्लो पाथ, एंड स्लो पाथ के जाने के बाद ये ड्रॉप हो जा रहा था, राइट? बट अभी स्लो पाथ से इट इज मूविंग टू द फास्ट पाथ, एंड फास्ट पाथ में जाने के बाद क्लियरली इसको अपना पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है टू डेस्टिनेशन, एंड इट वाज नॉट हैपनिंग इन द प्रीवियस स्टेज, बिकॉज प्रीवियस स्टेज में हमारा जो चीजें थी उसमें प्रॉब्लम थी, एंड वी फिगर आउट द प्रॉब्लम। सो कभी भी ट्रबल शूटिंग आपको करनी है तो पहले इस पैकेट फ्लो को खोल लेना आप लोग, ठीक है? तो आपको 3 चीजें चेक करनी है। पहली बात कि हमारी पॉलिसी है कि नहीं है, नेट है कि नहीं है, एंड देन द सिक्योरिटी
पॉलिसी, नेट एंड द राउटिंग, तीनों चीजें अगर आपके पास है, सो वी आर गुड टू गो। अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो वी आर नॉट गुड टू गो। बट अगर आपके फायरवॉल में 1000+ पॉलिसीज हैं, कई बार होता है 5000+ पॉलिसी हैं, 1000+ नेट है, सो हाउ यू आर गोइंग टू चेक दैट? सो उसके लिए आपको फिर 1 by 1 आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको डिबग यूज कर सकते हो, या आप पैकेट कैप्चर यूज कर सकते हो। बट मोस्ट केस में आपको डिबग अलाउ नहीं होता प्रोडक्शन में, तो आप बेसिकली पैकेट कैप्चर यूज कर सकते हो एंड यू कैन फिगर आउट कि कहाँ पे आपका ड्रॉप हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया था कि मेरा इस फाइल पे ड्रॉप हो रहा है, राइट? सो एटलीस्ट समझ आ गया कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस फाइल पे नहीं है। तो हमने ये चीज आइसोलेट कर लिया कि ये फाइल तो बिल्कुल मेरी सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। बट ड्रॉप इज हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फायरवॉल। सब इस फाइल पर ड्रॉप हो रहा है, तो वी कैन ट्राई टू फिगर आउट कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है, मुझे पॉलिसी में दिक्कत है, राउटिंग में दिक्कत है, या मेरा किसी अदर चीज में दिक्कत है। सो दिस इज हाउ वी कैन फिगर इट आउट। कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पैकेट कैप्चर एंड डिबग? बिकॉज आई नो कि कुछ बीच में प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से लैब हमारी बंद हो गई थी, बट फिर भी somehow we able to do that। तो अगर कोई क्वेश्चन है, so we can understand। So the first step हमारी गेटवे रीचेबिलिटी होनी चाहिए। If gateway is reachable, then we just have to check कि भाई पैकेट कैप्चर मेरा कैसा जा रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि पैकेट कैप्चर में सब कुछ सही जा रहा है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे ड्रॉप मिल गया, बट क्यों ड्रॉप हो रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा था यहाँ पे। सो व्हाट यू हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू इनेबल द डीबग। हमने यहाँ पे डीबग चलाया, डीबग चलाने के बाद हमें समझ में आया कि इस डीबग में यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ से पैकेट इनग्रेस पे आ रहा है एंड दैट इज गोइंग टू स्लो पास, स्लो पास से फास्ट पाथ, फास्ट पाथ में क्लियरली टनल के थ्रू पैकेट को यहाँ भेज रहा है। बट यहाँ पे जब पैकेट आ रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग कि आपका स्लो पाथ में ही पैकेट ड्रॉप हो जा रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा था? क्योंकि एक पॉलिसी बनी हुई थी, उस पॉलिसी के अंदर आपका डिनाई था, वो पॉलिसी का नाम भी लिख के आ रहा था आपको। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है आपको, सो ये आप इजिली फिगर आउट कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर 0 इज ऑलवेज 1। अगर यहाँ पे 1 है तो आपकी पॉलिसी सेकंड नंबर पे होगी, अगर यहाँ पे 2 है तो पॉलिसी आपके थर्ड नंबर पे होगी। ये इंडेक्स नंबर आपका 1000 है तो आपकी पॉलिसी वहां पे 1001 पे होगी। तो आपको उसको चेक करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग कभी भी। सर आपने कहा कि प्रोडक्शन में मतलब डिबग नहीं चलाना होता है, तो वहाँ पे पैकेट कैप्चर में तो इसने सिर्फ इतना बताया कि ड्रॉप हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वहाँ पे ये तो नहीं दिखा रहा ना कि हाँ, ये नहीं जो है दिखाएगा, तो आपको फिर डाउन टाइम लेना पड़ेगा, फिर आपको उसको अलग से चेक करना पड़ेगा इस चीजों को। आपको प्रोडक्शन में जैसे बिजनेस टाइम में नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इन बिजनेस टाइम, सो आपको आउट ऑफ बिजनेस आवर में इसको चेंज करना पड़ेगा। मीन्स कभी-कभी अगर पैकेट कैप्चर करते हैं, अगर हमको कुछ नहीं मिलता तो उसके लिए हमको डाउन टाइम लेना पड़ेगा, राइट? डाउन टाइम मीन्स की मतलब रात कि को आपका क्या जो बिजनेस आवर है, पड़ेगा? बिजनेस आवर है उसके आउट ऑफ बिजनेस, जैसे आपका 9 to 6 आपकी कंपनी चलती है, तो आप नाइट में कर सकते हो उसको, या 6-8 PM के बाद कर सकते हो आप। 12 से 6। सर रियल बताइए। टाइम पैकेट हम लोग देख सकते हैं क्या? रियल टाइम पैकेट में वर्क कर चुकी है सर, कभी कभी होता है ना ट्रबल शूटिंग रियल टाइम पैकेट में। हाँ, तो रियल टाइम या तो पैकेट फिर बताया तो कस्टमर को कि आपका दो तरह का, अच्छा कि एक तो आप बता पैकेट दिया, कैप्चर लगा के रियल टाइम देख सकते हो पैकेट में क्या हो रहा है, राइट? ये देख लूंगा सर। एक्चुअली कभी होता है, मैं ये पूछा, देख लूंगा वीडियो। कस्टमर हाँ को कभी कभी बोलना पड़ता है कि आप जब लॉगिन करो या जब कुछ एक्टिविटी करो देन आई हैव टू कैप्चर द पैकेट, राइट? हाँ। तो इस केस पे थोड़ा सा ठीक है, मैं वीडियो देख लूंगा फिर। ठीक है यार, ठीक है। सर ये डॉक्यूमेंट कुछ मिल जाएगा सर पढ़ने के लिए? एंड सर डॉक्यूमेंट विथ ये क्लासेस रेगुलर कब से होगी सर? बस आपको रेगुलर हो जाएगी बहुत जल्दी, इसी हफ्ते से रेगुलर हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे से आपको रेगुलर क्लास हो जाएगी। मंडे से हो जाएगा रेगुलर, नॉट दिस वीक, मंडे से हो जाएगा रेगुलर क्लासेस। ठीक है क्योंकि सर मुझे कल दिल्ली भी निकलना है, तो ठीक रहेगा। कोई बात मंडे नहीं, कोई बात है, हाँ कोई बात नहीं, मंडे से हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा सर क्लासेस। ये डॉक्यूमेंट जो ट्रबल शूटिंग वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए। एंड कुछ डॉक्यूमेंट सर। हेलो, डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैं शेयर करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, राइट? सबको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सर मतलब ऐसा कुछ उसमें सिलेबस रहे बाय स्टेप मींस स्लो देन हाई मींस। हाँ, वैसे ही क्लासेस वैसे ही होंगी, आप टेंशन मत लो। अभी आप पहला दिन है तो आपकी जो क्लासेस मंडे से होगी, दैट इज गोइंग टू हैपन स्टेप बाय स्टेप, कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और जो हम कर रहे हैं वो लास्ट का ये जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत सारे मॉड्यूल करना है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा।
आपको बिल्कुल फायरवॉल जीरो से स्टार्ट की जाएगी कि फायरवॉल होती क्या है, चलती कैसे है, वो सब बताने के बाद ही सब चीजें बताई जाएंगी। ठीक है सत्यम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर, ठीक है। वो वही बात है, वो सर लैपटॉप, वो जो विंडो के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, पीसी के साथ जो फायरवॉल आता है उसको यूज किए थे एक बार यूज कर यूट्यूब देख करके, बाकी ये अच्छा सब यूज नहीं। हाँ हाँ, अभी कर लोगे आप यूज, टेंशन मत लो, आप सीख जाओगे जल्दी ही। सर बस वो राउटिंग वाला बता दीजिएगा, ओएसपीएफ हाँ, और क्या राउटिंग वाला आपको संजय सीखना है? तो राउटिंग का जो संजय हमारा क्लासेस है ना, हम वी कैन डू इन दिस वे। इसका भी मैं एक पब्लिक बैच कर दूंगा, ठीक है, राउटिंग के लिए। तो उसमें हमने, मेरे लैब में होगा एक सेक्शन कहीं ना कहीं। और सर एक बात और था, हाँ बताइए। ये था कि सर, तो थोड़ा ये कि ये हिंदी क्षेत्र से है तो अंग्रेजी फ्लो होती है, समझ आ जाता है, लेकिन वो फ्लो में ही चला जाता है, मतलब कोई बात नहीं, आ हिंदी में जाता है कर समझ लेंगे, में, कोई लेकिन दिक्कत वो नहीं। फ्लो में ही चला जाता है। हिंदी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेंगे। सबको हिंदी सर आती वो है, को तो हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी हिंदी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसमें परेशानी नहीं होगी कोई भी। ठीक है सत्यम। ठीक है सर, ठीक है। संजय जी मैं बता रहा हूँ कि जो बीजीपी का है ना, एक काम करते हैं, बीजीपी का जो हम, जब हम ये बैच न्यू स्टार्ट करेंगे तो व्हाट आई विल डू कि जैसे आज का हमने ट्रबल शूटिंग का, तो बीजीपी का और एक ओएसपीएफ का 2 सेशन में ले लूँ, एक ही सेशन में दोनों चीज हो जाएगा, 1 आवर का सेशन है। तो मैं जब वर्चुअल राउटर पढ़ाऊंगा, इसके बाद की जो कॉन्फ़िगरेशन में एचए में मैंने एक लैब बना रखी है बीजीपी इंटीग्रेशन के लिए, जो मैं अभी इस बार नहीं कराया, बट ठीक है मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जनरली बीजीपी लोग कॉन्फ़िगर करते नहीं है पालो अल्टो में, इसलिए मैं कराता नहीं हूँ, बट किसी को सीखना है तो आई कैन डू दैट। सो इसमें एचए में हमारी बीजीपी है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, हमने बना रखा है, उसमें लैब में डाल रखा है, तो मैं उसको करके दिखा दूंगा आप लोग को। सो ये ओके कवर सर। करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सत्यम आपका एसडीएन वाला क्वेश्चन जो है, मैं आपको एक बैच का जब भी एसडीएन का होगा तो उसमें आ जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी डिटेल में कैसे एसडीएन की चीजें होती हैं, ठीक है सत्यम। हाँ, नहीं नहीं सर, मींस एसडी वैन तो मतलब क्या है कि सर जो जॉब करते हैं एसडी वैन था, मतलब एसडी वैन का मींस एसडी वैन को इम्प्रूव, जो पाइथन है वो कैसे, हाँ, मतलब यूज कैसे होता है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है वो तो मैं वही बोल रहा कि देखो, अभी अभी जो आपका सीसीएनपी इनकोर एक सिलेबस है, ठीक है, आपने कभी सुना है उसके बारे में, सीसीएनपी इनकोर? जी सर। हाँ 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 सर। सीसीएनपी इनकोर में अगर आप जाओगे तो आपका एक ऑटोमेशन चैप्टर है, राइट? सो उस ऑटोमेशन चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जिसको नहीं पता है आप लोग सब देख लो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी कैसे कैसे चेंज हो गई हैं। तो ये पाइथन का है, लैब वगैरह सब मैंने बना रखी हैं, तो उसमें आपकी चीजें होती हैं कि, तो इनकोर का सिलेबस अगर देखोगे आप, तो इनकोर कहाँ गया, ये होगा, देखिए आप, इनकोर में एक लास्ट चैप्टर है, इसमें ऑटोमेशन है, ठीक है। इस ऑटोमेशन के अंदर आपको ये पाइथन कैसे इंटीग्रेट होता है आपके किसी राउटर्स पे, कैसे चलता है, राइट, कैसे इसके थ्रू हम पाइथन के थ्रू राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे हम पाइथन से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को हम पुल आउट कर सकते हैं, कैसे हम रेस्ट एपीआई के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं राउटर से। तो ये सारा ऑटोमेशन में आपका एक मतलब चैप्टर है, इसको सबको समझना पड़ता है। तो इसमें आपको पाइथन के बारे में सीखना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, राउटर पे कैसे चलता है, कैसे उसके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपको जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के बारे में सीखना पड़ेगा, फिर आपको रेस्ट एपीआई के बारे में सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये सीसीएनपी इन कोर का पार्ट है। अगर आपको जस्ट इन जेनरिक सीखना है तो वी कैन डिस्कस इन द एसडीएन क्लास, जो हमारी एसडीएन क्लास होगी तो उसमें जेनरिक कैसे इसकी कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज कैसे होता है मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा सर, क्या है पाइथन के लिए कोई मतलब पाइथन तो एक लैंग्वेज ही है क्या? हाँ हाँ, पाइथन पढ़ने के लिए किसी अदर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, आप पाइथन को एक दिन में सीख सकते हो। हाँ वही, बड़ा क्योंकि इस बड़ा लैंग्वेज से तो बड़ा बड़ा अजीब मान सा लीजिए स्टेटमेंट है, जो बड़ा अजीब क्लासेस। सा। हाँ देखो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, मेरे पास रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, लर्न पाइथन इन 1 डे, ठीक है। ये बुक है, इसको मैं आपको दे दूंगा, आप एक दिन में पाइथन सीख जाओगे कि चलता कैसे पाइथन है, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। से मैंने नहीं बुक लिखी है, ये बहुत फेमस बुक है, आप लोग इसके बारे में पता करना है कि जिसने भी लिखा है ठीक बहुत है। अच्छी बुक लिखा है इसकी, लर्न पाइथन इन 1 डे, राइट। सो 1 डे का मतलब ये नहीं कि एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन हाँ, आपको पाइथन की पूरी चीजें एक दिन अगर थोड़ा ढंग से मेहनत कर दोगे तो एटलीस्ट आपको समझ में पाइथन होता क्या, चलता कैसे, क्या क्या हम कर सकते हैं इसके, तो मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा।
और आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन में होता कैसे है। अच्छा। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर होता है पाइथन की। इसमें देखो आप 3, मैंने लिखा यहाँ पे 3 × 45 अपने आप ही कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। कुछ भी अगर मैं लिखा तो कोई बड़ा नंबर इसमें डाल दूं, इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर करने करो तो ये कर देगा। तो कैलकुलेटर ना यूज करो, इसको यूज करना स्टार्ट कर दो अभी फिलहाल। डिवीजन, मल्टीप्लाई कुछ भी कर देगा। सो ये अभी आप इसको यूज कर सकते हो एज इट इज कैलकुलेटर। इसको डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करने का लिंक भी है, आप जाके गूगल पे सर्च मारोगे अगर, जस्ट आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो सर एक चीज और पूछना था, तो फिर जब सर पाइथन ऑटोमेशन सिस्टम पे इतना वर्क को हार्डली मतलब हार्ड से सॉफ्ट बना दिया है, तो एसडी-वैन का फिर रिक्वायरमेंट सर वो भी तो ठीक ही है, तो फिर उसमें से कोई एक ही इम्प्रूवमेंट नहीं, में आपको अभी क्लैरिटी नहीं है। देखो, नेटवर्क ऑटोमेशन अलग चीज है, एसडी-वैन टेक्नोलॉजी अलग चीज है। 2 अलग अलग चीजें, एक साथ इनको क्लब मत करो आप। ऑटोमेशन अलग है एंड टेक्नोलॉजी अलग है। आप इस तरीके से समझो कि कार बनती है ना, तो कार को मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, राइट? कार को मैन्युफैक्चर जी कंपनी करती है, तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आपका सेम हो, पार्ट्स उतने ही लगने हैं, राइट? और कौन सा पार्ट किस जगह पे लगेगा उतना ही फिक्स भी होना है, राइट? सब कुछ जितने भी स्क्रू एंड आपके बोल्ट्स हैं, सारे बोल्ट्स हैं, सारे एक ही जगह लगेंगे। लेकिन हो सकता है कि उसको, जो आदमी को इंस्टॉल करने में कार को टाइम लगता था 10 घंटे, राइट, उसको मैंने रोबोट से कर दिया तो वो 10 मिनट में कर देते हूँ सेम काम को। दैट इज ऑटोमेशन। तो काम वैसा ही होगा। अच्छा। टेक्नोलॉजी एसडी-वैन टेक्नोलॉजीज है, राइट? बट उस एसडी-वैन टेक्नोलॉजी को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और हम फास्ट कर सकते हैं ऑटोमेट करके अपने शॉर्ट नेटवर्क टर्म को। में, हाँ, हाँ, वो कम टाइम ऑटोमेशन में। करता है, हाँ, कम टाइम में। सो दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है। ठीक है सर, मतलब टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट मतलब मोस्टली जो हाँ। रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी तो जरूरी है तभी। ठीक है। राइट राइट राइट। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर हम सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए। अरे आज का वीडियो यूट्यूब पे है, मैं आप लोग को दे देता हूँ, रुको अभी ले लो ना अपलोड। क्या यूट्यूब पे देख लेना आराम से बैठकर। थोड़ा ऐसे अपलोड तो हो ही जाएगा, बट ये वाली वीडियो है, नहीं देखो सर, अभी ये वाला चल रहा है। रिकॉर्डिंग जो मिस हो गया ना सर, तो ये अरे रिकॉर्डिंग के तो बेस पूरी पर पूरी पूरी अभी मैंने, रिकॉर्डिंग इसमें है, अभी लो इसको देख लो। अभी शुरू से आपको जितना मिस हुआ मिल जाएगा अभी आपको इसमें, देखो। ठीक है सर, मिस हो गया ना, बहुत सारे क्वेरीज थे ये इसमें। मैंने यूट्यूब का लिंक दे दिया। अब इसको क्लिक करोगे तो आज का क्लास की इस पे वीडियो है, आज यूट्यूब पे ही अभी लाइव ही चल रहा था। आप लोग की अपनी आवाज भी आ जाएगी, सब कुछ, तो एंजॉय करो। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका। हमने लिंक भेज दिया। क्या? So I think we are good today. Okay, let's connect again in the new session. Okay, thank you guys. Thank you so much. See you again. Thank you everyone. Bye bye.